The next topic we will discuss is the characteristics of sound. The following are the characteristics of sound: loudness of sound, pitch of sound, and the quality of sound. Sounds of different objects can be distinguished on the basis of different characteristics: loudness, pitch, and quality. When we talk to our friends, our voice is low, and but when we address to a public gathering, our voice is loud. Loudness of a sound depend upon a number of factors. Some of them will be discussed, in which amplitude of vibrating body and the area of the vibrating body and the distance from the vibrating body. First of all, we will discuss what is the loudness of sound. Loudness of sound is the characteristics of sound by which we can distinguish between loud and a faint sound. लाउडनेस बेसिकली हमारे पास साउंड की वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें मतलब कुछ लोगों की आवाज़ें जो हैं वो ऊंची होती है और कुछ की मध्यम होती है, और सम टाइम एक ही पर्सन दो तरह से बात कर सकता है. सम टाइम वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहा होता है और सम टाइम जो है वो ऊंची आवाज़ में बात कर रहा होता है. इसकी मिसाल जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर हम नॉर्मल अपने साथ बैठे हुए किसी पर्सन के साथ डिस्कस कर रहे हैं, देन वी विल टॉक इन अ वेरी faint sound, and when we address or discuss something with majority of people, our sound will be loud. So the distinguish between loud and faint sound is called the loudness. अगर आपके पास एक आवाज़ बहुत ऊंची है, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी लाउडनेस क्या है, ज़्यादा है. और अगर आपके पास एक फेंट साउंड होगी तो हम कहेंगे उसकी लाउडनेस क्या है, कम है. और इसके बाद आपके पास आ जाता है पिच. पिच जो है, पिच इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड. श्रिल आपके पास है बारीक आवाज़ और ग्रेव है आपके पास भारी आवाज़. ठीक है, भारी भरकम आवाज़. मोस्टली मर्दों की आवाज़ जो है वो भारी होती है, औरतों और बच्चों की आवाज़ जो है वो बारीक होती है. ठीक है, तो बारीक और भारी आवाज़ों में जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, पिच. क्वालिटी, सम टाइम दो लेडीज़ ही बात कर रही हैं या दो जेंट्स ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों की आवाज़ में जो है वो डिफरेंस होता है. हम ये कह सकते हैं कि दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उनकी लाउडनेस भी तकरीबन सेम है, और दोनों जेंट्स हैं तो उनकी पिच में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ जो है वो हम डिफरेंस कर सकते हैं कि ये कौन बात कर रहा है या ये कौन बात कर रहा है. तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी. उन दोनों की जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो उससे वेव फॉर्म प्रोड्यूस हो रही है, वो आपके पास क्या होगी, डिफरेंट होगी. उसको हम क्या कहेंगे, क्वालिटी. क्वालिटी इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच. These are the three main characteristics of sound by which we can distinguish the different sounds from different bodies. Loudness of sound depends upon three factors: amplitude of vibrating body and the area of vibrating body and the distance of the vibrating body. First of all, we will discuss amplitude. These are the two waveforms of two different amplitudes. This waveform has larger amplitude and this waveform has smaller amplitude. What is the amplitude? Amplitude is the maximum displacement from the mean position on either side. From this to this is the amplitude, and this is the amplitude of the vibrating body. This wave has larger amplitude and this wave has smaller amplitude. So the loudness of this sound will be more and the loudness of this sound will be less. Area. लार्जर द एरिया, लार्जर विल बी द लाउडनेस ऑफ साउंड. जितना ज़्यादा एरिया होगा हमारे पास, लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने ही ज़्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट करेंगे और उनके रिजल्ट में लाउडनेस जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. तो जितना ज़्यादा एरिया होगा लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ द डिस्टेंस. अगर तो एक पर्सन आपके पास बैठ के बात कर रहा है तो आपकी उसकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा लाउड फील होगी, लेकिन अगर आप दूसरे कमरे से एक पर्सन की आवाज़ सुन रहे हैं तो जैसे जैसे वाइब्रेटिंग बॉडी से आपका डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा, आपको उसकी आवाज़ कम सुनाई देगी. ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. एम्पलीट्यूड और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा
As we have discussed loudness or characteristics of sound, in which loudness, pitch, and quality we have discussed, and the loudness of sound depends upon the factors amplitude of vibrating body and the area of vibrating body, and the distance from the vibrating body. Amplitude of vibrating body is directly proportional to the loudness, and area of vibrating body is directly proportional to the loudness of sound, and distance from the vibrating body is inversely proportional to the loudness of sound. एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी. एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी का जितना ज़्यादा होगा ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और ज़्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस होगी. और आपके पास लेकिन लिसनर का जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वाइब्रेटिंग बॉडी से, वैसे वैसे आपके पास जो है लाउडनेस कम होती जाएगी. ठीक है. सेकेंड करेक्टरिस्टिक है आपके पास पिच ऑफ साउंड. सेकेंड करेक्टरिस्टिक है हमारे पास pitch of sound. It depends upon the frequency. A higher pitch means higher frequency and vice versa. The frequency of the voice of ladies and children is higher than that of men. Therefore, the voice of ladies and children is shrill and of high pitch. The relationship between frequency and pitch is shown in this waveform. This wave and this wave. In this wave, the frequency is less, and in this wave the frequency is higher, because the number of cycles in this wave is less and the number of cycles in this wave is higher. So the frequency is higher in this waveform and the frequency will be less in this waveform. So higher frequency means greater pitch, and the lower frequency means faint sound.